अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन हज़रात, नवाज़ी-उर्दू यूट्यूब चैनल में आप सबका इस्तकबाल है। आज हम करना सेंट्रल टीईटी से चलाए जाने वाले साइंस के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। आज हम जनवरी 3, 2022 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन ए, मून ऑलवेज हैज द सेम फेस टुवर्ड्स द अर्थ. The moon completes one rotation in its axis simultaneously as it completes one revolution around the earth. Moon always has the same face towards earth. Moon क्या है, हमेशा सेम फेस दिखता है, नहीं चेंज होता है। The moon completes one rotation in its axis simultaneously as it completes one revolution around the earth. The moon completes one rotation. वो अपने एक्सिस में एक रोटेशन कैसे लगाते हैं वैसा ही साइमल्टेनियसली कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। तो यहाँ पर बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is true regarding the water content in the process of conversion of nectars to honey by honeybees? Water content in regarding the water content in the process of conversion of nectar to honey by honeybees. जब शहद की मक्खियों से शहद निकाला जाता है तो उसके अंदर वाटर कंटेंट कितना होता है? इट इज इंक्रीज, इट इज रिड्यूस्ड, इट रिमेन्स अनचेंज, इट में इंक्रीज और रिड्यूस, इट इज रिड्यूस्ड। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिश द बॉडी सरफेस इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम डीके बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो मछलियों में उसका सरफेस कैसा प्रोटेक्ट करता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन से सरफेस से वो प्रोटेक्ट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन, स्केल्स, म्यूकस लेयर, फिन्स, स्केल्स, म्यूकस लेयर, फिन्स, ब्लबर। म्यूकस लेयर में तो फिसलते हैं मछलियाँ ना, जब हम उसको पकड़ते हैं तो फिर उसके ऊपर कैसा लेयर रहता है? म्यूकस लेयर। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। Consider the following statements and choose the correct option. Assertion A, lions do not eat grass. Many animals cannot digest cellulose. What can you say about this? तो इसके मुताबिक आपको क्या कहना है? Both A and R true, but R and R is the correct explanation of A, क्योंकि वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, इसलिए तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following sources of carbohydrate contain gluten, a component which can cause allergy to some people? Which of the following sources of carbohydrate contain gluten? ग्लूटन रहने से चंद लोगों को एलर्जीज हो जाते हैं। तो इस किसके अंदर रहता है वो ग्लूटन? देखिए, राइस, व्हीट, रागी, जोवर। ग्लूटन किस में होता है? व्हीट में। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, X is a non-flowering and seedless plant that grows on land. Which of the following could be X? X एक ऐसा फ्लावरिंग प्लांट है, नॉन फ्लावरिंग है और सीडलेस प्लांट है। तो इसके अंदर वो कौन सा है? पाइन ट्री है, ऑल्गे है, ऑर्किड्स है, फर्न्स है। तो फर्न्स यहाँ पर सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is a set of chemical charges? Mixing sugar in milk, chemical changes, not charges, chemical changes है। Mixing sugar in milk, setting milk into curd, making cheese or paneer from milk, making butter milk from curd। तो यहाँ पर केमिकल चेंज कौन सा हुआ? मिक्सिंग शुगर इन मिल्क, तो ये केमिकल चेंज है, तो मीठा हो जाता है। सेटिंग मिल्क इनटू कर्ड, मिल्क से वो कर्ड बन जाता है, तो वहाँ पर लैक्टिक एसिड रहता है, फिर वो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है, ये भी केमिकल चेंज है। सही है। मेकिंग कॉटेज चीज और पनीर फ्रॉम मिल्क, मेकिंग बटर मिल्क फ्रॉम कर्ड, मेकिंग बटर मिल्क, यहाँ पर केमिकल चेंजेस नहीं होते होंगे।
तो मिक्सिंग शुगर इन मिल्क, तो यहाँ पर मिल्क और शुगर ये केमिकल चेंज हो जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर। तो स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर किसे कहा जाता है, वूल, सिल्क, फ्लीस, जूट। स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर कौन सा है, जूट ही है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर जूट है या सिल्क है, तो सही जवाब सिल्क है, ऑप्शन नंबर 2, वो भी नेचुरल लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज a synthetic indicator, turmeric solution, litmus solution, methyl orange solution, china solution। तो यहाँ पर सही जवाब है methyl orange solution। Aditi wanted to send a secret message to her friend. She gave her friend a letter which did not seem to have anything written on it. She asked her friend to rub the paper with a slice of beetroot, and the message appeared in dark red color. Which of the following could she have used to write the message? Common salt, glucose solution, baking soda solution, lemon juice। तो यहाँ पर उसने क्या यूज किया है, राइट द मैसेज, बेकिंग सोडा सोल्यूशन, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, identical twins are produced by identical asexual reproduction, fertilization of two eggs by two sperm, fertilization of one egg by one sperm। तो यहाँ पर सही जवाब है fertilization of one egg by one sperm, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है। Next question, why does the metal door knob feel cooler than a similar plastic knob on a cold day? Metal is a better conductor of heat than plastic, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, read the following statement carefully and choose the correct option. Ultrasound is inaudible to humans. The human ear has range to hearing between 20 Hz to 20,000 Hz. तो यहाँ पर सही जवाब both and are correct, and R is the correct explanation of it. Next, why is lighting conductor installed on a building? It repels the lighting before it falls on the building. It forces the lighting to fall in an area where there are no buildings. It conducts electric charge on the ground when lighting strikes the building. यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन नंबर 3। Severe burn injuries are likely to be caused by fire accident while wearing synthetic fabric rather than natural fabric as synthetic fabric. Severe burn injuries are likely to be caused by fire accident while wearing। तो जो फायर एक्सीडेंट होते हैं तो सीवियर इंजुरीज होते हैं, तो उसके अंदर वाइल वेयरिंग सिंथेटिक फाइबर रादर देन नेचुरल फैब्रिक एज सिंथेटिक फाइबर, तो हमें वहाँ पर उसका रीज़न क्या है, burns into ash, burns into liquefied vaporized, burns into flame, burns into sticky liquid। तो ये सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, सिंथेटिक फाइबर वो लिक्विड स्टिकी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इसलिए सीवियर बर्न इंजुरी हो जाते हैं। जब हम जलाते हैं तो सिंथेटिक फाइबर को वो ऐसे चिपचिपा हो जाता है, इसलिए हमारी स्किन क्या होती है, बर्न हो जाती है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ मिक्सचर्स, एयर, वाटर, वुड। Wood, salt, sand. Salt, sand, water. Wood, air, sand. Which of the following is a set of mixture? तो यहाँ पर कौन सा सही जवाब, ऑप्शन नंबर 4, वुड, एयर एंड सैंड, ऑप्शन 4 is the right answer।
A cyclist travels 360 meters in 2 minutes. What is her speed? तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 मीटर पर सेकेंड. The focal length of a concave mirror 20 centimeter. At what distance from the concave could the object place to produce a virtual image of the object? तो 10 centimeter. When a bar magnet is brought near it, the iron dust sticks. Mostly at the middle, only at the middle, equally wherever. मोस्टली नियर टू एड्स. जब मार मैग्नेट को हम एक दूसरे के सामने लेकर आते हो आयरन डस्ट स्टिक्स या रीटिंग द डस्ट स्टिक्स मोस्टली नियर टू द एंड्स, वो दोनों एंड्स में चिपक जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए बी सी एंड डी रिप्रेजेंट 4 मीडिया एज फॉलोज. Air, water, iron, vacuum. In which of the above media the spread of sound is least and maximum respectively? साउंड लीस्ट और मैक्सिमम किस में है? देखिए एयर, वाटर, आयरन, वैक्यूम. तो यहाँ पर सही जवाब एयर एंड आयरन. ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. एयर और आयरन में क्या होता है, वहाँ पर साउंड लीस्ट होती है और मैक्सिमम भी होती है, स्प्रेड नहीं होती वो साउंड. A teacher puts a leaf in a test tube and puts spirit alcohol in it. Now he heats the test tube till all the green color comes out. Then he takes out the leaf and pours some iodine solution on it. The student write the following statement in their notebook. The leaf turns blue-black in color. The leaf contains starch. Which of the following statement is correct? तो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट होता है, तो वहाँ पर कौन सा ऑब्जर्वेशन और कौन सा इन्फ्लुएंस है वो हमें देखना है. तो यहाँ पर ये द लीफ टर्न्स ब्लू ब्लैक इन कलर, जब बच्चे इसको देखते हैं तो लीफ यहाँ पर ग्रीन कलर का था और ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गया. तो ये इज ऑब्जर्वेशन. बी द लीफ कंटेन्स स्टार्च. क्यों उनको पता चलता है, इसका कंक्लूजन क्या आता है, बी कंटेन्स स्टार्च. तो इन्फरेंस. Which of the following is an appropriate objective for organizing science fair in school? Getting a good publicity for the school in society. Publicity के लिए ये नहीं करते. Increasing the student interest in science, ये सही है. Student interest के लिए हम ये science fair बनाते हैं. Next question. Adapting the science curriculum as per the understanding level of students ensures is content validating, historical validating, कॉग्निटिव वैलिडेटिंग. इसको हम क्या कहते हैं, कॉग्निटिव वैलिडेटिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन. A class 7 teacher plans a task for students of classifying 25 plants. Which of the following strategies best support inquiry teaching? Teacher explains scientific classification system and demonstrate it. 25 plants के. Teacher gives rules for classification and asks students to classify the plants. Teacher allow each student to classify in their own way and discuss them. तो यहाँ पर ये सही है, ज़्यादा अच्छा लग रहा है बच्चों को खुद ओन तरीके से और डिस्कस करने से बच्चों के अंदर क्या है नॉलेज की ये बढ़ जाती है. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही है. टीचर कंडक्ट अ फील्ड ट्रिप टू शो प्लांट्स. फील्ड ट्रिप से ज़्यादा डिस्कसिंग करने से और क्लासीफाई करने से ज़्यादा नॉलेज बढ़ती है, तो आपस में कम्युनिकेशन स्किल बढ़ती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, चूज द करेक्ट ऑप्शन. School science textbook need to include episodes from history. Historical development of ideas in science is important for a holistic understanding of science. तो यहाँ पर both A and R यहाँ कहाँ पर
ट्रू है, लेकिन एक इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो यहाँ पर देखिए बोथ एंड आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is correct regarding assessment in science? Same type of task should be given to all students for objectivity and parity. सेम टाइप्स ऑफ टास्क देंगे स्टूडेंट्स को। यूज ऑफ करेक्ट साइंटिफिक वोकैबुलरी शुड बी द ओनली क्राइटेरिया ऑफ आंसर्स। स्टूडेंट जस्टिफिकेशन ऑफ द रेस्पॉन्स शुड बी पार्ट ऑफ असेसमेंट। तो ये कैसे करेक्ट रिगार्डिंग असेसमेंट कैसा है साइंस के अंदर, तो यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर ओनली सीज द स्टूडेंट जस्टिफिकेशन ऑफ द रेस्पॉन्स शुड बी पार्ट ऑफ असेसमेंट, ये सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। Next question. Which of the following statement describe the nature of science? Scientific knowledge is tentative. We say. Next, scientific explanation are falsifiable. We say it is a process of describing the world around us. So, it is body of ultimate knowledge. Ultimate knowledge की body नहीं है, तो यहाँ पर A, B, C सही है, तो option number 1 is the right answer. Next question. Which of the following is a micro-level intervention aimed at improving the teaching learning of science in middle schools initiated during the late 1970s? Hoshangabad Science Teaching Program. तो micro-level intervention at improving teaching learning of science of middle schools जब during the late 1970 में होशंगाबाद साइंस टीचिंग प्रोग्राम यहाँ पर ये था, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। Next question. Teaching science through discovery focuses on the products of learning. टीचिंग साइंस को डिस्कवरी के मुताबिक टीचिंग साइंस को टीच करना कैसे, फोकस ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ लर्निंग, प्रोडक्ट्स के लिए नहीं है, तो रॉन्ग है। फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, तो ये सही है, बच्चों को लर्निंग के ऊपर फोकस करना है, सेंटेड मेमोरी मिल्स नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। अ साइंस टीचर ऑफ क्लास 7th asked the students to measure the body temperature of 10 peers and record their observation. तो यहाँ पर साइंस टीचर क्या बोलती है, 10 मेंबर्स के क्या करना, बॉडी टेम्परेचर को ऑब्जर्व करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस स्किल कैन बी असिस्ट यूजिंग द एक्टिविटी, तो हम इस एक्टिविटी को क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटिंग कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। तो नेक्स्ट हम जनवरी 4 के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, which of the following represent correct matching of difference of vitamin of column A with their functions in column B? विटामिन ए keeps our skin and eyes healthy. विटामिन सी क्या करता है, helps body to fight many diseases, ये भी सही है। तो ए का सेकेंड और बी का थर्ड किसमें, देखिए ए का सेकेंड और बी का थर्ड इसमें है। विटामिन डी हेल्प्स बॉडी टू इज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ, ये भी सही। विटामिन बी प्रॉपर फंक्शन बॉडी से मेंटेनिंग हेल्थ, तो सी का फर्स्ट, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following modification help the cactus to survive in desert condition? Leaves in the form of spines, say stem is succulent and perform the function of leaf, we say stem is covered with thick layer of wax, तो ये भी say root lie near the surface, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, an element reacts with oxygen to give a water soluble compound which turns red litmus to blue. This solution also used to test carbon dioxide gas. The element is, तो एलिमेंट वहां पर कैल्शियम, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
certain body movements are associated with the movement of certain joints. तो यहाँ पर joints के बारे में बताया गया है. Match the following body movements in column A with the type of joint responsible for the movement of column B. तो column A क्या है? Bowling a cricket ball. Bowling a cricket ball. तो हम ऐसा बॉल हाथ से बॉल को फेंकते हैं, तो ऐसा राउंड करके. तो यहाँ पर किस जॉइंट का इस्तेमाल होता है? तो यहाँ पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. तो ऑप्शन नंबर 1 ए का 4. टर्निंग द हेड इन लेफ्ट और राइट डायरेक्शन. टर्निंग द हेड लेफ्ट और राइट डायरेक्शन, तो उसे क्या कहते हैं? पाइवोटल जॉइंट है इसका आंसर. नेक्स्ट एल्बो मूवमेंट. एल्बो मूवमेंट हिंज जॉइंट बोलते हैं इसको. अपर जॉ मूवमेंट ड्यूरिंग लाफिंग, तो उसे फिक्स्ड जॉइंट बोलते हैं. तो यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. A person shows stunted growth, swelling of face, discoloration of hair and skin disease. This may due to the deficiency of. तो इसकी कौन सी डिफिशियंसी ऐसे सिम्टम्स और डिजीज आते हैं? तो इसका सही जवाब है प्रोटीन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. Match the following plants in a column A with the modification of column B. Question. Algae fragmentation. Fungi. Fungi spore formation. Dahlia. Detached by dahlia by roots. Cactus. Detachment of body parts. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 is the right answer. Next question. Given below are some substance and their mode of storage in the laboratory. Match the correct answer. सोडियम मेटल. सोडियम मेटल को हम किस में स्टोर करते हैं? केरोसिन. फॉस्फोरस को अंडर वाटर. सोडियम हाइड्रोक्साइड पेलेट्स को इन ए प्लास्टिक बॉटल. मर्क्यूरी इन ए ग्लास बॉटल. तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Srijan participated in a marathon although he is not a regular walker. Cramps occurred in his legs due to fast running. This happened due because he partially broken down. A. जब वो रन करता है तो सृजन पार्टिसिपेट इन मैराथन. जो ही इज नॉट रेगुलर वॉकर, वो एक रेगुलर वॉकर नहीं रहता है. जब वो रनिंग के लिए चला जाता है तो फास्ट रनिंग की वजह से उसके लेग्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं. दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ. वो किस वजह से क्रैम्प्स आते हैं? ग्लूकोज की वजह से. और partially broke down to lactic acids in muscles. A hot water bath improved his condition due to the complete breakdown of carbon dioxide into water. तो कार्बन डाइऑक्साइड इंटू वाटर. तो यहाँ पर सही जवाब है ए बी सी डी क्या है रेस्पेक्टिवली. ग्लूकोज, इलेक्ट्रिक, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर. तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is not a function of man? Improvement of soil texture, replenishment of soil with nutrients, providing pockets in the soil for seed to grow, improvement of water retaining capacity of soil. तो नॉट अ फंक्शन. मैन्योर का फंक्शन कौन सा नहीं है? तो रिप्लेसमेंट ऑफ सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंप्राइजेस ह्यूमन डिजीज कॉज्ड बाय अ वायरस. तो वायरस से यहाँ पर ह्यूमन डिजीज, वायरस कौन सी ह्यूमन डिजीज आती है वायरस से? ट्यूबरक्लोसिस, मीसल्स, कॉलेरा, पोलियो. हेपेटाइटिस ए वायरस से आता है. मीसल्स ये भी है वायरस. पोलियो ये भी वायरस. चिकन पॉक्स ये भी वायरस. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सब वायरस से आता है. तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन. वेरियस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड देयर यूजेस आर गिवन बिलो in a column A, B respectively. Choose the correct matching set.
coke, manufacturing of स्टील, कोल टार रोड्स बनाने के लिए यूज करते हैं, और कोल गैस हम कब यूज करते हैं, यूज एज अ फ्यूल इन इंडस्ट्रीज, विटामिन यूज फॉर परफ्यूम और एक्सपोर्ट, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following represent the correct matching set? फ्लैक्स, स्टेम, कॉटन, कॉटन कैसा है, फ्लावरिंग प्लांट, कॉटन फ्लावर, सिल्क, कॉटन में कैसा मिलता है, फ्लावर से मिलता है, फ्लैक्स में स्टेम से मिलता है, सिल्क ककून से मिलता है और कोकोनट फाइबर से मिलता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 is the right answer. Next question, choose the correct statement from the following regarding plastic. Thermoplastic can be molded again and again, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following activities should be avoided during thunderstorm to safeguard oneself? Which of the following activities should be avoided during thunderstorm to safeguard oneself? Talking to wired phones, बैटिंग लो, तो safeguard नहीं है, जब बारिश और बिजली गिरती है तो हमें फोन बात नहीं करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, sound waves will not be able to travel through which of the following? Wooden, scale, metallic, wire, cloth, string, vacuum, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 glass cylinder A, B, C and D 25 centimeter and same diameter are taken and filled with water up to 20 centimeter. The holes made A at 5 centimeter, B at 8 centimeter, C at 10 centimeter. And D at 12 centimeter from the bottom of each cylinder. In which cylinder will be water coming out of the hole travel the farthest? So option number 1 is the right answer. Next question, match the gadget in a column A with apparatus required to prepare them in a column B. Pinhole camera, 2 boxes of different sizes, a translucent screen. Next, kaleidoscope, 3 rectangular mirror strips, a circular plain glass plate, some pieces of bangles and cardboard tubes and disc. ऐसे यूज करते हैं। पेरिस्कोप कैसे यूज करते हैं, two plain mirrors and a hard cardboard box. न्यूटन्स जिसको सर्कुलर कार्डबोर्ड टॉप विद पेंटेड 7 कलर्स ऑन इट, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is not the function of the nucleus in the cell? To provide shape and rigidity to the cell, it is not function. Next question, which of the following is an example a question to assess divergent thinking in learners on the topic of fossil fuels? Write 5 advantages of solar energy over fossil fuel. List the step involved in formation of coal. Draw the label diagram of fractional distillation of petroleum. What would happen if all the petroleum reserves are finished up? तो ये कैसा सवाल है, डाइवर्जेंट थिंकिंग का क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement are correct regarding scientific theories? They explain the observations based on given information. They can make prediction about the results of future observation. They are generalization of empirical observation. Once proven, a theory cannot be disapproved. तो फॉलोइंग स्टेटमेंट यहाँ पर कौन सा करेक्ट है रिगार्डिंग साइंटिफिक थियरीज के लिए? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 ए एंड बी आर द
That's it. They explain the observation based on given information. They can make prediction about results of future observation. Next question. A teacher gives the following task to the students of class 6. Visit a garden or local nursery and identify the plants which are healthy and give reasons for identifying those plants are healthy. Which process skills are being promoted in this activity? तो इसमें कैसे एक्टिविटी कराना चाहिए? ऑब्जर्विंग, डिफाइनिंग, ऑपरेशन. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट लग रहा है. Which of the following is not an expository activity of teaching science? A teacher shows videos and habitat of various plants. A teacher demonstrates an experiment to show that a current carrying coil has a magnetic field around it. A teacher provides a concept map to show the relationship between higher not between higher and lower order. A teacher asks open-ended questions and seeks explanation. क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन से यहाँ पर बच्चों को नहीं समझ में आता, तो एक्सपोजिटरी एक्टिविटी पर कौन सी नहीं थी, तो वही थी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following statement is correct? Gender equity in science implicates making girls as good as boys in science. Gender equity in science implicates for both girls and boys. यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही है. Gender equity in science aims at making science more attractive to girls. Wrong. Gender equity in science aims at creating more single-sex schools. Read the following and choose correct option. Children's ideas about the science content are often domain-specific and may be conflicting. Children's alternate conceptions in science demonstrate linear reasoning from cause to effect. करेक्ट ऑप्शन को यहाँ पर चूज करना है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. A student puts a pinch of turmeric in solution marked A and B. She writes the following statement in her copy. Solution A turns red and there is no change in solution B. Turmeric can be used to difference between acid, base and salts. तो इसमें यहाँ पर क्या है? Solution A turns red and there is no change in solution B. First one observation, next one is 3 are influence. So 3 is the option. Option number 2 is the right. Next one is observation, S2 is influence. S3 नहीं. S3 turmeric can be used between acid, base and salts. ये use is same. Which of the following is an open-ended question? देखिए, why do we see only one face of moon from the earth? Why do we see? Why does the shape of moon change every day? What happens during a lunar eclipse? What would happen if period of rotation and evolution of moon are different? तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है. Next question. Which of the following illustrate assessment of learning in science? Olympiads, investigatory projects. Assessment of learning in investigatory project. Annual exams में competitions. Next and the last question. Assertion A. Read the following statement and choose the correct option. Science teacher should discuss socio-scientific topics in the class. As socio-scientific topics promote multiple perspectives and argumentation skills in learner. No, as socio-scientific topics are usually controversial and involves multiple perspectives. तो यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा है? A is correct. R1 is correct explanation for A. ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है. तो आज हम जनवरी 3rd और 4th के दोनों क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं और बहुत सारे क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करने के लिए अगली वीडियो में मुलाकात होंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.